अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति वइस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका
ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. आयत का तर्जुमा है La traducción de estos और versículos जब इब्राहीम y cuando उस खास घर की बुनियादों को उस्तवार कर रहा था Abraham और इस्माइल भी e Ismael levantaron los cimientos de la casa pidiendo, Señor nuestro, acepta esto de nosotros, porque tú eres el que todo lo oye, el que todo lo sabe. Oh Señor nuestro, haznos sumisos a ti y haz de nuestra descendencia un pueblo sumiso a ti, y enséñanos nuestros lugares de culto, y vuélvete a nosotros con misericordia, porque tú eres revisorio, con compasión y misericordioso. Alhamdulillah, आज हमें hoy nosotros en España दूसरी estamos teniendo la oportunidad de inaugurar la segunda mezquita Ahmadiyya, y मस्जिद बनाने की तौफीक es la segunda mezquita que Dios ha permitido 7 साल पहले construir. Hace 7 años, मस्जिद बशारत en la mezquita Becharat, en Pedro Abad, मजीद dije, मसाजिद बनाने की अहमियत पर जोर दिया था hice hincapié en construir más और उसकी mezquitas, फैसला हुआ था y se tomó la decisión en aquel entonces que en Valencia se construyera la segunda mezquita. अहमदियों की तादाद से ज़्यादा Más मस्जिद que बनाना मेरे पेश नज़र en इसलिए sí, इस इलाके में था debido al número अहमियत इसलिए थी de Ahmadis, que tenía un poco अहमदी तो शायद इस इलाके में el 30 sentimiento, के करीब हैं porque los Ahmadis no son más de 130, es posible que sean más en otros lugares, pero ये मस्जिद esta mezquita बशारत era o बाद es, जो तमीर करने की después de la mezquita जो Basharat सोचा गया de Pedro Abad, उसकी अहमियत यहाँ के तारीखी लिहाज से se construyó debido también al tema histórico, al aspecto histórico, वो कि y es que तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे के बाद Después de- अहमदिया को de 30 años la comunidad Ahmadiyya le ha dado la oportunidad de construir esta otra mezquita, y en मुसलमानों este, की इस मुल्क में en este periodo पैदा शुरू हो गई los musulmanes han venido en grandes cantidades y han construido también mezquitas, मस्जिद बशारत की pero वजह से debido रास्ता a la mezquita Basharat se abrió un camino 700 nuevo, साल बाद पहली मस्जिद porque बनाने की después de 700 años जमात अहमदिया को ये अल्लाह ताला ने अता फरमाई Dios dio la oportunidad a la comunidad Ahmadiyya de hacer la mezquita Basharat. यहाँ की अहमियत बयान करने से पहले Antes de hablar de la importancia de construir esta mezquita मुसलमानों aquí, की तादाद debo decir que यहाँ los musulmanes en España son más o menos और ये ख्याल 1 किया जाता millón, है y se 2030 piensa तक que hasta el 2030 entre 80% ellos इजाफा होकर habrá un aumento de un 80-90%, es decir, en los 20 siguientes años puedan ser 2 millones. चंद हज़ार थे Hace 30 años eran और अब तो miles, que ahora son तादाद 1 millón, y la mayoría de ellos son los que provienen del norte de África, मोरक्को अल्जीरिया वगैरह से Marruecos, Argelia, etcétera. इसमें ये भी कहा जाता है कि वो लोग भी शामिल हैं También se dice que entre esta gente están unidos पुराने aquellos मुसलमान कबाइल के थे और जिन्होंने अपने इस्लाम que को काफी provenían de las tribus antiguas de los musulmanes y que fueron convertidos por la fuerza al cristianismo hace 700 años, हज़ारों y की तादाद में pueden haber miles
estas personas que entre estas familias, como he dicho, que por la fuerza se hicieron cristianos o sus hijos fueron hechos cristianos. Así pues, en España se ve que el Islam él va a venir de nuevo y con la ayuda de Allah se ven muchos musulmanes, pero como he dicho, el comienzo se ha hecho a través de la comunidad Ahmadiyya y sin embargo el verdadero Islam se verá en verdad cuando los descendientes, los seguidores del Mesías pongan su atención y el mensaje bello del Islam intenten transmitirlo a cada persona de esta tierra. Es posible que muchas personas escuchan los que son tristes, los que son pesimistas, que los Ahmadis somos muy pocos y cómo podremos nosotros llevar este mensaje a cada rincón de España. Pero si pongan empeño con el grupo que son ustedes, podrían hacer llegar el Ahmadiyya, el verdadero Islam, a una parte importante de la población. Para ello, a pesar de haberse dicho ya repetidas veces, no se han hecho planes, no se ha hecho el ejercicio y no hemos podido conseguir lo que el plan que el centro nos ha enviado o que Hazrat Rabe les dio, no se ha cumplido ese plan. La mezquita Basharat es un hecho donde la gente que pasa desde la misma carretera general y si se buscara algún medio para darle a conocer el mensaje de la Ahmadiyya tuviera llevado mucha gente. Hay comunidades que trabajan bien y a pesar de ser menos que ustedes han hecho un esfuerzo y han llevado el mensaje de la Ahmadiyya a lugares en cantidades muy grandes de gente. En la mezquita de Pedro Abad, aunque es verdad que viene gente a verla y vienen a veces también delegaciones, pero si hubiera un espíritu, ganas de predicar, se podría llevar el mensaje de la Ahmadiyya mucho más. ¿Sí? Las otras comunidades musulmanas que no tienen organización, ellos han ido con estas gentes que fueron convertidas por la fuerza del cristianismo y unas 20.000 personas de nuevo han sido traídas hacia el Islam. Entonces nosotros, que somos el verdadero Islam, ¿por qué no pueden venir hacia nuestra comunidad? Nosotros hemos abierto el camino para traer el Islam a España, pero ese camino no lo hemos mantenido con una energía y un espíritu y se han aprovechado los demás. Por lo tanto, queda un tiempo en España, los Ahmadis que viven en España y los responsables, cada cual en su área, tiene que entender su responsabilidad y debe ponerse un objetivo que luego debe intentar cumplir. El verdadero Islam que nosotros presentamos hoy lo necesita el mundo entero. Nosotros tendremos que contactar con estas cámilas que fueron cometidas por la fuerza y que ahora es el momento de tomar la represalia, pero no por la fuerza, porque la enseñanza del Islam
es la ikrah fid-din, no hay compulsión en कि materia de जब fe. हुआ कि तो Esa इन लोगों conversión ने por la किया fuerza शायद que उनकी se तालीम hizo, इस्लाम की a lo तालीम mejor fue la ना ही enseñanza इस्लाम ये de कहता है los किसी कौम से antepasados, pero जुल्म करके el Islam que no बदले लो। permite que siendo injustos tomáis अल्लाह represalias ताला sobre फरमाता otros है pueblos, कि porque किसी Allah कौम की Ta'ala दुश्मनी dice que तुम्हें no इंसाफ करने से la रोके। enemistad de un pueblo no os lleve a फरमाया, cometer injusticias, sino que वो dijo, आकर ha dicho, ehdelu wa aqrabu lit-taqwa मतलब इंसाफ करो wattaqullah, तकवा के porque ज्यादा करीब है tenéis que ser Allah का justos, taqwa es más cercano तकवा ही तुम्हें al खुदा temor ताला de की Dios. का कुर्ब Es el दिलाएगा taqwa lo que os मुझे अल्लाह ताला denominará el तकवा इख्तियार el करने वालों से cariño de मोहब्बत Allah, porque Allah quiere a los que tienen taqwa. और यहाँ तो दुश्मनी का तो सवाल नहीं Aquí no estamos hablando de हम कौम enemistades, इसलिए हम somos कौमों तक del mismo ये pueblo, पैगाम मोहब्बत और por प्यार lo का tanto पहुंचाना है tenemos que llevar este mensaje de बस amor हमने a los इनको बताना है demás. कि Tenemos पहले que खुद decirles इस्लाम que की खूबसूरत primero तालीम इख्तियार करो deben seguir las बदले verdaderas इस तरह लो enseñanzas del Islam कि इस y खूबसूरत luego तालीम tomar से la हर शख्स को दिल represalia और de जिन forma que दिलों से tenéis que जबरदस्ती ganar el corazón या de लालच los demás या y खौफ से aquellos corazones que ला por इलाहा miedo इल्लल्लाह o la मोहम्मद रसूलुल्लाह avaricia की मोहब्बत निकाल दी गई o se और extrajo, se जबरदस्ती खुदा extrajo ताला का el cariño a la ilaha illallah शरीक Muhammad Rasulullah al-Kalima बनने की तालीम y se उनके les दिलों में extrajo de esa enseñanza खुदाए वाहिद वाहिद और de मोहम्मद un Dios रसूलुल्लाह uno y de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era su Us profeta. खुदा की Tenemos मोहब्बत, que hacer crear de nuevo ese हर चीज़ पर cariño en sus corazones, और porque उस este रसूल की cariño मोहब्बत es जो रहमतुल eh, आलमीन था el que prepondera y ese mi el cariño hacia जिम्मेदारी ese है Rasul que es कि जहाँ una हम misericordia para हम toda la तबलीग humanidad. और इस्लाम También का पैगाम es nuestra पहुंचाएं responsabilidad que वहाँ según transmitamos el ऐसे mensaje de कबाइल la का भी खोज Ahmadiyya, लगाएं también फिर busquemos a esas gentes उनमें y उनके असल दीन esas की gentes que मोहब्बत fueron musulmanes नए सिरे से पैदा करके y de nueva forma, de कामयाब nuevo, con nuevo मुबल्लिग ímpetu, बना दें nosotros les hagamos जैसा कि मैंने कहा misioneros, como he वलेंशिया की dicho तारीख की अहमियत की en la वजह से historia मैंने de यहाँ Valencia, मस्जिद बनाने की तरजीह दी थी cuando dije que se hiciera la mezquita aquí, es porque cuando en España अमेरिका ने जबरदस्ती मुसलमानों को ईसाई बनाना शुरू किया था el rey cruento y la reina वलेंशिया उस जमाने cruenta में थी वो इलाका था convirtieron por la fuerza जहाँ a los बावजूद musulmanes मुसलमानों al के साथ cristianismo. बसलूकी के Aquí आगे se बढ़ी les जाती थी maltrató. इस्लामी Era रसूल una तो कायम हुआ ciudad que hablaba था árabe, que estaba, रखा हुआ था digamos, siguiendo los preceptos मुसलमान musulmanes, अपने en realidad o en la इबादत की práctica बनाते थे और उन्होंने adoraban जो कि इस्लामी según el तालीम है precepto उसको islámico, कायम रखे हुए थे según las enseñanzas islámicas, y दूसरे seguían इलाकों este में patrón, mientras que en मुसलमान otros lugares ग्रुप की los सूरत में रहते musulmanes लेकिन vivían, किसी भी pero किस्म का de alguna ऐसा forma इजहार नहीं करते थे no mostraban जैसे este इस्लाम comportamiento खुद por el cual el Islam इसी se वजह les से viera जब en 17वीं सदी के शुरू में su forma इस de वक्त के vivir. बादशाह ने Por eso, cuando en el siglo मुसलमानों को हम लोगों XVII, को जिनके खानदान cuando el पहले rey स्पेन से निकालने की मुहिम फिर से शुरू की dijo que había que सबसे expulsar a पहले todos los musulmanes de वलेंशिया का España, आगाज comenzó यहाँ के ये por- मुंसिफ का आगाज वलेंशिया से किया por Valencia, Nunca, por esta región, porque जैसे मैंने कहा aquí मुसलमान अपने दीन los दीन को musulmanes कायम रहते हुए viviendo según las enseñanzas islámicas कि जिस हद तक अमल कर सकते थे intentaban करने की कोशिश seguir करते थे o intentaban seguir hasta donde podían las Creo que- enseñanzas del Islam. उस वक्त यहाँ मुसलमानों En की aquel हालत momento, माशी लिहाज से काफी Desde el कमजोर punto de थी vista económico, और उनको आहिस्ता los आहिस्ता musulmanes बड़े vivían शहरों से निकाल कर eh, गिर के इलाकों में humildemente, शहरों के se les साथ ले गया था। expulsó de las उनकी ciudades जायदादें उनके पास थी y tuvieron que refugiarse लेकिन फिर भी en las इनको montañas. इस्लाम से ताल्लुक था। Vivían de forma pobre, pero estaban Bajal. relacionados con el Islam. मुख्तलिफ किस्म की फौजें यहाँ आती रहीं Vinieron Fauजें भी आईं। ejércitos desde उन Italia मुसलमानों को निशाना también इन्हें बनाया y फैसला के los मुताबिक y querían para expulsar a los musulmanes, pero जुल्मों के बाद बालगों को después de मुल्क estos बदल कर दिया crímenes और उनके बच्चों को que se ईसाइयों cometieron में contra ellos,
जिन्होंने a बच्चों sus को अपने hijos, घरों में कुर्बान चढ़ाया, les educaron en familias लेकिन अपने बच्चों की तरह cristianas, नहीं, बल्कि pero नौकरों और no गुलामों की como तरह। sus propios hijos, sino como बस वो esclavos. बच्चे जो इस्लाम से Esos छीने गए थे, hijos que वो fueron बच्चे जो मुसलमानों के घरों में पैदा हुए थे, secuestrados del वो Islam मुसलमान थे, y que nacieron en उन्हें familias उनकी musulmanas y और eran उनके माँ बाप की musulmanes मर्जी के बगैर y sin el खुदाए consentimiento de sus वाहिद padres की इबादत से रोका गया, se les impidió और उसके rezar बजाय en इसलिए इसको el मानने पर Dios मजबूर किया único गया। y se les obligó आज a हमारा creer काम en है la Trinidad. Hoy कि उन nuestro बच्चों की नस्लों trabajo को es दोबारा que a खुदाए estas वाहिद की इबादत करने familias वाले nosotros और सिर्फ उन्हें नहीं les बल्कि यहाँ रहने traigamos वाले हर शख्स hacia को, el Dios जिससे único y no solo हमें ellos, इंसानियत से sino मोहब्बत toda की वजह से aquella मोहब्बत, persona que हर शहरी debido जो a यहाँ nuestro रहता है cariño hacia la उससे हमें humanidad, मोहब्बत है hacia इसलिए cada uno de कि los हम ciudadanos que इंसानियत से aquí मोहब्बत vive, करने वाले हैं। porque queremos a la इंसानियत humanidad, की मोहब्बत की वजह से हम उनके लिए वही debido a पसंद nuestro करते cariño हैं hacia la जो humanidad अपनी y que पसंद करते deseamos para ellos lo que हैं। इन deseamos लोगों para को इस nosotros, वजह से tenemos खुदाए de वाहिद की nuevo इबादत करने वाला बनाकर atraerles hacia el Dios उनकी दुनिया único और आपको संवारने वाले बनाए y que les sirva और इस para इलाके में खास तौर salvaguardar पर su vida en este mundo en इसकी el que कोशिश viene. करें, जैसे Y कि hay मैंने que hacer कहा, un esfuerzo यहाँ especial सबसे en ज़्यादा este लंबा lugar, इस्लाम को porque aquí महफूज estuvieron और कायम los रखने की कोशिश की musulmanes durante más tiempo. गई। यहाँ से मुसलमानों के खराज की खास Los musulmanes सदियाँ नहीं मनाई जाती, salieron. बल्कि यही Aquí no माना se जाता celebran है los 7 सबसे siglos, आखिर sino que में se celebra 4 सदियाँ que पहले al final, यहाँ से hace मुसलमानों को 400 निकाला años, se या sacó a los मुसलमानों की नस्ल को musulmanes de खत्म aquí करने की कोशिश की गई। o se intentó acabar con las यकीनन familias musulmanas. इसमें कोई शक नहीं Ciertamente no hay कि duda, यहाँ dice Azur, सदियों मुसलमानों की que हुकूमत कायम रहने के बाद después de estar los उसका musulmanes जवाब gobernando durante मुसलमानों की siglos, अपनी लालचों और al साजिशों की final, वजह से हुआ। debido a los propios भी problemas नाम entre की los खिलाफत थी, musulmanes, sea cual fuera el khilafat, उससे भी वफा नहीं की गई, no se fue ना fiel con él. खलीफा या बादशाह ने अपनी Ni जिम्मेदारी el का rey अदा किया, ना ही Cumplió con खवास sus और उमरा जो थे obligaciones, ni उन्होंने हक अदा la किया। gente que eran los amires और फिर cumplieron con sus deberes y इसलिए हर एक ने obligaciones, अपनी अपनी 1.5 की मस्जिद बना ली थी। y cada uno hizo su mezquita डेढ़ independiente की मस्जिद बनाकर y haciendo बादशाह कायम करने की कोशिश की। estos reinados, और hicieron नतीजा unos जो है califatos कामों का donde al निकलता final वो el निकला। egoísmo prepondera, salió लेकिन lo que अब tenía que salir, मसीह मोहम्मदी pero hoy, जो खातमुल después de खुलफा la venida del जो Mesías, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के que es खिलाफत राशिदा के बाद después del नंबरदार califato Rashida, es el representante जिनके del बाद Santo फिर Profeta Muhammad खिलाफत sallallahu alaihi जारी wasallam, y que se iba a उनके मानने वालों restablecer का el काम है khilafat con él. कि Los seguidores de él tienen la कोई भी obligación साख को दोबारा este tesoro perdido en este país, en esta tierra, ला इलाहा de इल्लल्लाह nuevo मुहम्मदुर se रसूलुल्लाह की restablezca हकीकत से y que al mundo entero hagamos की conocer हकीकत la verdad दुनिया को बताई de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que la gente अल्लाह ताला conozca. ने हमें इस इलाके में Allah Ta'ala अपनी en मस्जिद बनाने की este तौफीक अता फरमाई। lugar nos ha जगह permitido भी construir अल्लाह una ताला की mezquita. फजल से बड़ी मोहब्बत El का lugar मिली। con la ayuda de Allah es ये मस्जिद भी muy मोटर buen से नजर sitio, आती है, se ve desde la carretera बिल्कुल मोटर general के ऊपर है, लेकिन y está en la carretera बातें general, में दी है। pero अच्छी está तरफ también en का una zona इलाका है ये, जाहिर भी अच्छी और शरीफ है। nueva. Los vecinos अल्लाह son ताला ने personas हमसाई की भी cultas, अच्छी अता फरमाई, respetuosas, ये भी उसका बड़ा एहसान y है। también nos ha dado बस unos vecinos buenos, इस también es मौके un से हमें favor फायदा de उठाना Allah Ta'ala. चाहिए। Por lo tanto, मस्जिद बनाकर सिर्फ deberíamos इस बात पर खुश ना हो जाए obtener ventajas y no कि estar स्पेन के एक और शहर में हमारी contentos खूबसूरत solo मस्जिद बन गई। de que hemos hecho una mezquita muy bonita en अपनी España. हालतों पर भी नजर रखनी होगी, Tendremos अपनी बातों पर que भी नजर रखनी mirar होगी, अपनी nuestros जिम्मेदारियों पर actos, भी नजर nuestras रखनी होगी। oraciones, nuestras ये आयात जो मैंने obligaciones. तिलावत की हैं, Estos versículos que se han recitado hablan de Santo Abraham y de Santo Ismael, अल्लाह ताला के घर la की forma तामीर के bella बाद que उसका estaban हक अदा construyendo, करने cómo का construían बता दिया। la casa de Allah y nos साथ ही enseñaron cómo हक अदा करने agradecer. के लिए
Y al mismo tiempo que cumplían con su obligación, nos enseñaron cómo hacer las oraciones. Por lo tanto, es necesario que hagamos hincapié en ello para que una generación tras otra seamos personas que merezcamos adorar en esta casa. Allah Ta'ala dice que cuando estaban haciendo los padres de la casa decían, oh Señor, esta divinidad acepta nuestras plegarias, porque tú eres quien todo lo es. Y son los profetas los que están más cercanos de Allah Ta'ala. Durante años están haciendo sacrificios, el padre está haciendo un sacrificio, el hijo también, la mujer está sacrificándose también, pero no están diciendo que llevamos tanto tiempo haciendo sacrificio y ahora la casa que estamos haciendo la estamos haciendo por ti, la estamos haciendo porque tú lo digas, por lo tanto nos merece ahora, merecemos que cualquier sacrificio nuestro sea aceptado y que ahora tengamos comodidades. En la comunidad de Ahmadiyya no hay una tradición, pero entre los otros musulmanes hay una tradición, y es que se hace un pequeño sacrificio, después intentan que se propague a los cuatro vientos. Cuando dan 2 o 4 o 6 rupias, lo anuncian, y si lo se hacen más, se dice muy en voz alta. Pero el mensaje que frente a nosotros Allah Ta'ala nos ha mostrado a través de estos 2 profetas es que el hijo está dispuesto a ser sacrificado, el padre está dispuesto a sacrificar al hijo, y todo ello se está haciendo cuando el niño es de pequeña edad y es un padre anciano, y luego el sacrificio continúa cuando a la mujer y al hijo les deja en un sitio abandonado, un desierto, donde existía la posibilidad, debido a la sed y al hambre, la madre y el hijo fallecieran. Luego llega una época cuando Allah Ta'ala escucha la oración de la esposa, y si no tenían antes posibilidades, Allah Ta'ala les da comida y bebida, y comienza la construcción de la casa de Allah. Y allí son solamente 2 personas que están diciendo que con esta construcción ahora están cerrados todos los caminos, ahora, oh Dios, Dios y su casa, vamos a poblarla, a la casa de Allah. Y que venga ese tipo de personas que sean creyentes, que sean gente buena, que sean gente que recuerde a Allah, que cumplan con la devoción que Allah merece. Una población, unas gentes que lleguen al límite de la adoración de Allah Ta'ala. Estas eran estas personas que bajo la orden de Allah Ta'ala estaban haciendo la casa de Dios, y el cariño que tienen hacia Dios es tan grande que la oración es eso: oh Allah, acepta este sacrificio por tu misericordia, acepta, porque esto nos va a unir más a ti. Este es el sacrificio, es la acción del sacrificio, porque luego hay que posternarse delante de Dios y hay que hacer la oración de que se acepte. Y este es
método que tenemos que ये tener presente. इब्राहीमी और इस्माइली सोच और दुआ है जो आज हमें Este pensamiento इस de तरफ तवज्जो Abraham दिला रही है। e Ismael nos lleva a हम pensar जो इस ज़माने के इब्राहीम की तरफ Hoy. मंसूब होने वाले हैं, जिसको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि que वसल्लम nosotros की कामिल इताअत pensamos और इश्क व मोहब्बत की la वजह से persona que en perfecta वो एजाज़ बख्शा है armonía अल्लाह y ताला ने sumisión al Santo इस Profeta, ज़माने का। Allah Ta'ala demostró उसने ser दीन को y Abraham de esta मुसलसल época, दीवारों पर aquella persona दोबारा उस्तवार करके que दिखाया। de nuevo हम गवाह हैं reedificó el templo, los templos de और Abraham. रोज़ नज़ारे Y देखते हैं somos testigos ऐसा इस्तवार किया porque vemos कि अगर उस पर सही तरह अमल करने वाला हो, hechos diarios बताया पलट जाता que si fuéramos realmente दीन practicantes, इस्लाम की खूबसूरती nuestra को vida cambiaría इस तरह चमका कर completamente. पुर Y que अजमत nos और ha hecho शौकत brillar la बनाकर vida siguiendo una दिखाया vida pura del गैर Islam, मुस्लिम भी कहने लगे nos ha mostrado कि अगर यही इस्लाम है जो तुम पेश que este करते हो, cambio puede हम ser इस्लाम के tal खिलाफ que अपने los कहे no हुए musulmanes मुकाबले dicen que Pues si este es आज vuestro Islam, entonces Ibrahim के retiramos todo lo que जरिए tenemos en contra de esta खाना religión. काबा Hoy की con तामीर este के मकासद पूरे हो Abraham रहे हैं और इस्लाम están की खूबसूरत तालीम cumpliendo की रोशनी भी दुनिया पर जाहिर हो रही है se están mostrando las enseñanzas bellas और इन्हीं del मकासद पूरा करने Islam के en लिए el mundo entero. Y दुनिया para में cumplir हमारी हर तामीर होने वाली estos मस्जिद दुआ है objetivos, nuestras होनी चाहिए। mezquitas dan testimonio. और यही आज इस de मस्जिद ello. का मस्जिद जिसका नाम Y बैतुल रहमान este रखा गया es है, el objetivo de esta mezquita, Beitul इस मकसद के Rahman, रसूल का जरिया बनने का इजहार कर रही है। para cumplir este objetivo. बस ये मस्जिद जहाँ हमें आजिज़ी के साथ Esta ताला mezquita, के हुजूर donde झुकते por un हुए lado उसकी nos तामीर dice के que मकसद को tenemos पूरा que करने ser की तरफ humildes y तवज्जो tenemos दिला que रही है, cumplir वहाँ हमें इस las, तरह की तवज्जो दिला रही है los objetivos, pues también nos está diciendo que अपनी tenemos que जिम्मेदारियों को cumplir पूरा nuestras करें। obligaciones, tenemos que cumplir nuestras अगर हम अपने obligaciones. अहदों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे Si cumplimos nuestras तो फिर ही हम अपने obligaciones मकासद को हासिल कर सकते y nuestras हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि ए मसीह मोहम्मदी objetivos, और podremos आ हज़रत decir, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के decías, आशिक साथ el santo profeta हमने जो Muhammad, आपसे el seguidor अहद बैत del बांधा है santo Muhammad sallallahu alaihi दीन को wasallam, दुनिया पर मुकदम el रखें bayat que hemos hecho, और तौहीद को दुनिया में darnos फैलाएंगे। dirección तो इस मस्जिद की al तामीर की वजह mundo से frente a जो दुनिया की la religión frente al इस्लाम mundo, की तरफ तवज्जो पैदा होगी, debido तबलीग के जो रास्ते a este खुलेंगे, interés que va a hacer उनका हक अदा Islam, करते हुए los caminos अपनी para la तमाम तर सलाहियतें predicación, बरूए कार लाते हुए que तौहीद का क़याम daremos todas और nuestras मुल्क के बशिंदों को capacidades para que आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले a las जाना habitantes हमारा वलीन de फर्ज estas होगा zonas les traeremos bajo la bandera de ए खुदा, sallallahu alaihi wasallam. ए समी और Inshallah, अली por खुदा lo tanto, oh हमारी दुआएं oh सुन Dios ले। que escuchas हमें todas अपने las फराइज़ निभाने oraciones, की तौफीक escucha अता estas oraciones, danos la oportunidad de मस्जिद cumplir con nuestra जो तेरे घर responsabilidad. की रुतबों में बनाई Esta गई mezquita que इसको se ha hecho मुकासद के pensando en हसूल ti, का जरिया बना जो तेरे घर बनाने के मकासद haz que sea un objetivo para para las que para lo que se construyen को भी जानता है। estas बस mezquitas. हमारी Tú दुआएं eres सुनते हुए conocedor, somos हमारी débiles, नाअहलियों escucha से nuestras नजर करते हुए oraciones, हमें मस्जिद की तामीर के ignora nuestras मकासद debilidades को पूरा करने y वाला बना। haz que seamos los que podamos cumplir con मस्जिद की खूबसूरती, las obligaciones मस्जिद की वसअत, de la adoración en ये la हमारे mezquita. उस वक्त काम आ La सकती हैं belleza de जब una हम mezquita puede उसका valer हक अदा करने वाला बना। cuando cumplamos con las obligaciones de esta mezquita. और हक अदा करने के लिए जहाँ Y para cumplir मस्जिद को आबाद करके con अल्लाह ताला की las इबादत करने obligaciones वाले हैं हम una हों, mezquita, वहाँ अल्लाह ताला के cuando बंदों के हक अदा cumplamos करने वाले भी हैं। con प्यार, Allah, मोहब्बत और cumpliremos con भाईचारे को nuestros semejantes, रोक देने वाले हम हों, tendremos un ताकि ambiente इस्लामी de hermandad para इस्लाम की que हकीकी तालीम के अमली नमूनों का हमसे la इजहार verdadera हो, enseñanza del Islam, ताकि la verdadera enseñanza del Islam लोगों की se तवज्जो muestre, salga हमारी de तरफ हो, nosotros, para que ताकि la इस्लाम की gente se खूबसूरत fije en तालीम को nosotros, para que दुनिया la समझने की कोशिश करे। enseñanza verdadera del Islam ए el अल्लाह mundo las सुनने entienda. वाला है, Oh हमारी Allah, ये दुआ भी सुन ले। tú इस escuchas, मस्जिद की ज़ाहिरी खूबसूरती से escucha ज़्यादा también esta oración, इस मस्जिद की आबादी की que, रूह को que aparte de la Azul belleza de esta करके mezquita, lo que हमें दिखा importa es que el espíritu de असल में esta तो इस मस्जिद की mezquita तामीर की रूह sea है bello, जो
अगर Y de हकीकत hecho में हम में es, पैदा हो जाए si en verdad तो उस मकसद को हम tuviéramos हासिल करने वाले बन जाएंगे eh, जिसके लिए मस्जिद तामीर की el objetivo claro, जैसा कि मैंने बताया entenderíamos जब para qué यहाँ ha sido सदियों मुसलमानों construida की la हुकूमत mezquita. रही He dicho तो बड़ी बड़ी que खूबसूरत cuando मस्जिदें vivían los मुसलमानों ने musulmanes बनवाई había कुतुबा की मस्जिद mezquitas muy देखकर bonitas, इंसान हैरान रह por जाता ejemplo la mezquita de और Córdoba, दूसरी जगहों पर uno se मस्जिदें queda absorto. Y जहाँ जहाँ hay बाकी mezquitas en मुसलमानों की otros बड़ी बड़ी lugares मस्जिदें también मस्जिद donde ऑस्ट्रेलिया में vivían नाता los वगैरह में musulmanes, लेकिन जब en Sevilla, en इस्लाम की Granada, हकीकी तालीम थी pero उन cuando el verdadero मसाजिद में आने espíritu वालों del में Islam मफकूद हो गई तो वही जगह desapareció en जहाँ estas खुदाए वाहिद का नाम लिया esos जाता था sitios या तो मिसमार donde कर दी se गई llevaba el nombre de या Allah, शिरक की अमाजगाह बन fueron गई destruidas, कुतुबा की o मस्जिद se les hizo lugares de हैरत होती adoración, कैसी खूबसूरत और como मजबूत iglesias. इमारत है Mirando सदियां गुजरने के Córdoba, बाद भी uno ve que उसकी खूबसूरती que और han मजबूती pasado में cientos de जरा años भी फर्क नहीं आया y su belleza sigue लेकिन igual. बदकिस्मती से Pero, आज वो गिरजे में तब्दील हो चुका है desafortunadamente, hoy जैसा कि मैंने se ha कहा convertido en una iglesia. कि असल चीज इमारत He नहीं है dicho असल चीज वो que el रूह objetivo है no es el जो इस edificio, इमारत में आने वालों sino el objetivo es और रहने el वालों की मदद espíritu होती de है la gente que venga बस जब en मुसलमानों esta में mezquita. वो रूह खत्म हो गई Por lo tanto, तो मस्जिदें cuando गैरों ese में तब्दील espíritu करी desapareció en los musulmanes, तो अगर इस मस्जिद की अजमत las mezquitas को las हमने कायम cogieron रखना है los और ajenos. यकीनन कायम रखना Si है इंशाल्लाह queremos continuar तो फिर con el espíritu, इसकी रूह को कायम रखने की कोशिश ciertamente करें mantendremos el espíritu. और ये कोशिश हमें मेहनत Debemos से करनी होगी luchar, अल्लाह ताला के tenemos हजूर que ये दुआ hacer un करनी होगी esfuerzo, कि अल्लाह tendremos que pedir delante de Allah Ta'ala que Allah o मस्जिद Dios की रूह को कायम करने वाले हमेशा पैदा फरमाता रहे haz ताकि क़यामत que तक la ये gente तौहीद का मरकज़ con रहे espíritu तौहीद के para नारे que यहाँ से sea बुलंद hasta हों el final de los tiempos खुदा की नज़र un में lugar de la adoración de हमारी Dios कुर्बानी único, कबूल हो a la vista फिर ही ये de मकसद Allah, que se हकीकत में acepte हासिल किया जा nuestra plegaria. फिर Entonces दूसरी आयत में podremos हम conseguir देखते este हैं objetivo. कि इन बुजुर्ग अंबिया ने Luego, en otro अपनी versículo दुआओं को vemos que estos खुदा के घर की profetas, तमीर के साथ cuando ना सिर्फ hacían la oración para अपने तक महदूद रखा la gente que iba a बल्कि अपनी venir, औलाद no solo और नस्ल pedían तक को para ellos, वसी sino की। pedían para sus बस ये familias, है दुआ sus का तरीक़ा generaciones. और ये है Y esta es la तरक्की करने forma वाली de adorar, नस्ल दर नस्ल y esta es la forma de कामयाबियों से हम फिलहाल होते चले जाने que este mensaje की सोच और फिक्र continúe generación tras generación. Y este debe ser la preocupación अगर ये फिक्र और सोच होगी de que este mensaje se propague इंशाअल्लाह en ताला las generaciones futuras. Si esta preocupación हमारी existe, कामयाबी entonces, inshallah, Dios quiere, और फिर ये दुआ solo tendremos éxito tras कि éxito. हमारी ज़ुर्रियत को भी Y luego también, नेकियों पर कायम रख que, oh Allah, तब इस घर haz की que आबादी का también मकसद nuestras familias डॉक्टर estén साहब यहाँ बैठे हैं sometidas también a ti. ¿Está sentado aquí el médico? आगे देख रहे हैं Que mire qué le pasa. बहरहाल ठीक है फिक्र की जरूरत नहीं है अब आप बाकी सारे बैठ No hay जाएं que छोड़ दीजिएगा preocuparse, dice tú, déjame el lugar, dice tú. जब तक आगे पैर मरें ठीक हो जाएगा मेरा ख्याल है ड्यूटी के साथ सर्कुलेशन ठीक नहीं की Dice, háganme un poco de masaje y volverá a reanimarse, porque parece que es un problema de circulación. तो बहरहाल मैं कह रहा था कि ये अपनी Dice tú que अगर ये सोच और फिक्र हमें कायम रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबियाँ हैं si tenemos esta preocupación, तो हमें ये Allah दुआ भी करनी चाहिए nos dará कि अल्लाह ताला éxito. हमारी ज़ुर्रियत को भी Tenemos que hacer la oración नेकियों पर कायम también रखे de que Dios a nuestras familias ताकि las mantenga इस घर की आबादी का también मकसद en la हमेशा bondad हासिल होता चला para जाए que जैसा siempre मैंने कहा tengamos कि el कुर्बानी el beneficio de esta mezquita. जब हुकूकुल्लाह और La हुकूकुल इबाद aceptación अदा करने del वाले लोग sacrificio हमारी नस्लों में será से पैदा होते रहें cuando cumplamos इबादत करने con वाले हमारी los नस्लों में से derechos de पैदा होते Allah रहें y los derechos de sus और इस semejantes. तरह पर इबादत करने वाले Ya पैदा हों hayan इस तरह adoradores अल्लाह ताला entre nuestros descendientes, से de हम दुआ forma करें como जैसा Allah ताला हमसे Ta'ala चाहता है। बल्कि हम दुआ करें कि ऐ अल्लाह desea y que hagamos la oración que, oh Dios, तूने इबादत का हुक्म दिया है
और तरीक सिखाया है। Tú nos has dicho que te adoremos y nos has enseñado el método. जो दुआ इन लोगों ने भी की थी अम्बिया ने कि Y हमें las भी वो oraciones que तरीक hicieron सिखा también los profetas. वारेना मनासिकन Enséñanos esos métodos. और हमें अपनी बातों Warena, को मानने की तरीक manasikana, ये दुआ y हमें भी करने की जरूरत है। enseñar la forma también हकीकत यही है de cómo कि hacer बातों और sacrificio. कुर्बानियों के Es तरीक verdad, dice Ruth, अल्लाह ताला की रहनुमाई से समझ que la आती है। forma de las adoraciones Esquirú, y los sacrificios se entienden उसको por Allah गहराई Ta'ala, में y vienen जाकर de Allah समझने Ta'ala, y का इदराक cuando uno अल्लाह ताला की profundiza फजल से पैदा होता है। en este tema, uno se da cuenta बेशक con la ayuda de नमाज भी Allah, इबादत का este एक तरीक है। conocimiento मस्जिद में लोग आते हैं se obtiene. और इबादत Es करते verdad que la gente viene a la लेकिन यही mezquita नमाजी हैं y adoran a उनके Allah बारे में अल्लाह Ta'ala, ताला फरमाता है pero estos जो hay कि orantes उनकी que नमाजें Dios उनके मुंह पर dice मारी जाती हैं और उनके लिए हलाकत का बायस बन sus जाती है। oraciones serán devueltas y van a ser बस motivo de अल्लाह ताला के फजल destrucción. को मांगते हुए ऐसी नमाजें हमें अदा Por करने lo की कोशिश tanto, करनी pidiendo चाहिए la ayuda de Allah, जो tendremos उसकी que hacer नज़र में unas पूर्ण हो। oraciones que और फिर सिर्फ नमाजें ही नहीं sean हर aceptables a काम la vista de Allah, no जो solo खुदा ताला के रसूल के लिए oraciones, किया जाए sino वो इबादत बन cualquier जाता है, trabajo que se haga por चाहे वो Allah हुकूकुल es बात, adoración. बस इस रूह को समझना sea- बहुत जरूरी है। Por lo tanto, es necesario entender Así बात este नहीं। espíritu. हमें याद रखनी चाहिए Debemos इबादत recordar, की रूह को pues, समझकर ही हम तौहीद के que पैगाम को फैला सकते debemos entender el espíritu de la हैं और adoración, अपनी नस्लों में distribuir इस el पैगाम को mensaje de la रास्ता कर unidad de Dios y a और उसके लिए nuestras जैसा कि generaciones इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है debemos नस्लों के लिए बहुत तड़प कर दुआ transmitirles करने की como जरूरत है। Santo Abraham हम hacía MD oraciones muy अपने इजलासों profundas में por sus ये ऐद करते हैं कि हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। descendientes. Nosotros en las तो इस ऐद की रूह को los ángeles decimos que estemos अपनी नस्लों में preparados फूंकने की जरूरत para cualquier sacrificio. है ताकि दीन Pero की es इशाअत के necesario que लिए esto también huele कुर्बानियाँ करने वाले en लोग पैदा होते nuestros रहें। jóvenes, nuestros लेकिन descendientes, ये para याद que रखना nazca चाहिए ese tipo de कि gente de बदलते हुए हालात jóvenes के मुताबिक que कुर्बानियों के तरीके बदलते रहेंगे और ये भी sigan. एक मतलब है इस Pero दुआ का। la forma de la oración variará, lo que esto significa esta oración. स्पेन में Warena, पहले मुसलमान Manasikana. Si los primeros जो दाखिल हुए musulmanes en वो मदद के España लिए आए जिहाद भी किया que entraron और दादरसी y hicieron के लिए आए el थे jihad और फिर वो आगे फैलते चले गए। y vinieron बेशक तलवार de का जिहाद pequeña किया उन्होंने cantidad y luego se fueron propagando. आज Es verdad que emplear una कुर्बानियाँ espada, तो लीग के जिहाद hoy के लिए थी। los sacrificios शायद van a लिटरेचर के ser लिए a través माली de la कुर्बानियाँ करके yihad, del tabligh, मसाजिद की तामीर के लिए y será a través del sacrificio Mali-Qurbaniyah económico करके। con publicaciones, y será कुर्बानियों की con नौइयत sacrificio económico हालात para के hacer मुताबिक mezquitas. बदल जाती है। Las, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को los sacrificios varían कि हम उन्हें कुर्बानियों के तरीके porque सिखा esta oración y de en Santo base a la Abraham mutabik, enséñanos अपनी los रजा के रसूल métodos के de लिए adoración, es decir, कुर्बानियों और variando, बातों के तरीकों में सिखा। इस दुआ को कुरान करीम में y nos महफूज cuál es la करके mejor forma de हमें adoración. ये रसूली El Santo Corán ha हिदायत preservado अल्लाह ताला ने esta फरमाई forma कुर्बानियाँ de adoración, porque yo nos hablo al हालात के principio मुताबिक देनी। de que los sacrificios van a ser según las इस तरह ocasiones और इस किस्म की करनी है y जो खुदा ताला की रजा la को समेटने voluntad que वाली है। desarrollar es aquella इसलिए यहाँ que हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने atraiga el किसी को contento सबसे de बड़ी Allah. नेकी Por eso el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam बयान फरमाई कि तहज्जुद a uno le पढ़ा dijo करो। que la किसी mayor को bondad es फरमाया que veces कि तुम्हारे लिए tahajjud, सबसे बड़ी नेकी ये a है otro le dijo कि जिहाद किया करो। que para ti lo mejor जिसमें जिस नेकी es की que कमी hagas हो el jihad. वही उसके लिए ज़रूरी है और वही उसके लिए Es बड़ी decir, lo que uno tenga वही उसके लिए menos मुनासिब es, हाल इबादत का तरीक है es lo और que वही él debe desarrollar, उसके लिए es la मुनासिब forma हाल de adoración कुर्बानी है। y बस इस दुआ es el में mejor sacrificio que अपने él लिए puede hacer. और Por अपनी eso नस्लों en के esta लिए oración, हर किस्म para की कमजोरियों को दूर nosotros, करने para nuestras और खुदा ताला generaciones, की रजा के हसूल के tenemos लिए que कोशिश पर distraer बहुत ज़्यादा जोर las दिया गया है। debilidades y tenemos que हमेशा याद trabajar रखना चाहिए duro. कि इंसान Debemos की कोशिश से pensar ना que ही el ser बातों के humano con मयार su हासिल कर esfuerzo सकता है ना no puede कुर्बानियों के मयार ni हासिल कर सकता conseguir un है। rango इसलिए alto de दुआ oración. अर्ज है कि तुब अलैना Por eso
हम पर La तौबा कबूल oración करते हुए झुक जा, dice, Tub Aleina, हमारी नेकियों que को कबूल acepta कर ले nuestras और फिर नेकी से नेकी faltas, फूटती रहे, perdona nuestras एक faltas नेकी से अगली नेकी की जाग चलती y haz रही। que salgan de una कुर्बानी से कुर्बानी फूटती रहे, bondad más que otra bondad, तेरी इबादत de que el तेरी sacrificio रजा चाहते हुए vaya creciendo, हम करने वाले हों, que ना कि दिखावे के लिए। tu adoración no और ये sea इबादत solamente फिर हमारी सोचों un का objeto महवर बन जाए। de exposición, बस हम खुशकिस्मत होंगे अगर हम अपनी sea algo इबादतों और कुर्बानियों को seremos करने वाले बन जाएं। afortunados si हमेशा अपनी गलतियों और nosotros कोताहियों seamos और ज्यादतियों से capaces अल्लाह ताला de के पनाह में hacer आने के लिए este tipo de दुआएं करने oración, वाले que हों, nuestras faltas अपनी नस्लों के pidamos perdón para que दिलों Allah las में अल्लाह perdone ताला y और उसकी en las इबादत की generaciones मोहब्बत पैदा futuras करने वाले nuestras हों। और ये Allah उसी सूरत में हो Ta'ala सकता है जब हमारे अपने दिलों permita में ये मोहब्बत हो। generar cariño hacia la oración हुकूकुल इबाद की अदायगी para की तरफ que तवज्जो se देने वाले propague a través de nuestras किब्र और generaciones नफ़रत को futuras, छोड़ने वाले que हों, cuidemos de नमाजों में nuestros सुस्तियों को दूर करने hermanos वाले हों, más हर वो necesitados, नमाज que जो हमारे लिए अदा करनी मुश्किल नजर आती है, echemos las debilidades, la pereza Buscar que fuera salga de nuestras oraciones, अगर हमारे y el अंदर que más nos cuesta ese es el que más debemos poner hincapié, hacer बाजमात नमाजें hincapié. अदा करने में सुस्ती है तो नमाज Si बाजमात अदा no करने की hacemos तरफ las oraciones en तो जो conjunto, देने वाले बन जाएं, tenemos ये हमारे लिए que कुर्बानी है। poner el तो esfuerzo माँ en बाप का हक hacer अदा करने वाले नहीं, las वो उनके हक अदा करने वाले बन oraciones जाएं, en जो conjunto. बहनों भाइयों और अजीजों Y के si no हकूक lo अदा hacen los करने वाले padres, नहीं, que lo hagan los वो हकूक अदा hermanos करने y वाले las बन जाएं। hermanas. हमसाए को खुदा ताला ने Si बड़ा no मुकाम lo दिया hacen है, los familiares, lo hagamos हमसायों के nosotros. हक अदा A करने los, वाले बन जाएं। a los हमसायों से हर vecinos रहमती का सलूक hay que tratarles con máxima उसको consideración. अहमदियत और हकीकी इस्लाम का A los vecinos दरवीदा बनाने वाले बन debemos जाए, ये कोशिश हर रहमती की होनी चाहिए। transmitir el mensaje, la ahmadiyyat गलत के del हर नेकी Islam, का अदा करने वाले और उसका हक अदा करने की कोशिश करते cada हुए नेकियां bondad. करने वाले हम होंगे तो तब भी हम Si हकीकी तौर पर intentamos अल्लाह ताला से ये अर्ज करने hacer वाले बन सकते हैं buenas obras, कि ए अल्लाह हमारी entonces तौबा कबूल कर, podremos decirle a Allah Ta'ala और que, हमको oh रहम Allah, कर। acepta nuestra हम oración, अल्लाह ताला के रहम के ten तलबगार हैं, misericordia de nosotros, जब बनते हैं porque buscamos तो tu दूसरों पर भी हमें misericordia. फिर रहम की नज़र डालनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ताला से रहम मांगते रहें और अपने दायरे में रहम करने वाले ना हों। No basta que बस solo मस्जिद के साथ pidamos अगर एक मोमिन misericordia एक ही रंग में a मुंसलिक Dios होता है nosotros y no seamos तो नेकियों के नए से नए misericordiosos. दरवाजे Si uno se une a una अल्लाह ताला की बख्शिश के नए से नए इजहार उससे se होते abren हैं। nuevos आज हमें caminos, se अल्लाह demuestran ताला की तरफ से nuevos caminos de करदा perdón. मस्जिद हमें इस तरफ Por तवज्जो eso, दिलाने वाली होनी चाहिए esta mezquita que Dios nos ha dado कि nos इजहार llama हम la सब atención, esta इस mezquita, मस्जिद को que यहाँ के रहने se वालों ने cumplan estos खुद ही आबाद रखना है requisitos. और अपने A los बच्चों que के लिए aquí इसकी आबाद viven करवाना है deben इंशाल्लाह। venir और इसका para हक अदा rezar करते en हुए ella y traer a आबाद sus करवाना hijos para और मस्जिद में आना que मकसद vengan है, también, इसका हक अदा करना ही tienen मकसद que probarla. El अल्लाह objetivo ताला no करे es venir a la कि वो mezquita, तमाम बरक़ात sino cumplir con las obligaciones de la और mezquita. अल्लाह ताला के फजल Que Dios quiera जो मसाजिद के साथ वाबस्ता हैं que todos los हम हासिल favores करने que वाले están हैं। relacionados con la mezquita अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल los करने वाला consigamos, और हमारी गलतियों को माफ़ करने वाला हो। que Dios एक हदीस में perdone आता है nuestras faltas. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Hay un hadith que del Santo Profeta Abu Muhammad Huraira से ये sallallahu रिवायत alaihi है wasallam, कि क्या मैं dice, Hazrat Abu Huraira relata, ना बताऊं कि इसके करने से अल्लाह ताला खताओं को os मिटा digo देता है, una obra दर्जात को बुलंद फरमाता है। que Dios perdona y और eleva मैंने अर्ज़ किया कि जी el rango. फरमाएं। तो हमने फरमाया Dijeron, कि जीना sí, चाहते हुए भी díganos कामिल वजू करना, अच्छी तरह वजू करना que aunque और मस्जिद की तरफ ज़्यादा चल el के जाना, hacer el wudu de forma ये एक नमाज adecuada, के बाद दूसरी ir नमाज का andando इंतज़ार hacia la करना, mezquita, ये रिबात है, रिबात है, रिबात esperar al siguiente más यानी शर्तों की हिफाजत करना है, cuando se ha acabado el anterior. Esto jihad es el हमारे ribat, esto es बस el हम में से हर ribat, एक esta es la को guerra santa para सिर्फ nosotros. वजू देने की ज़रूरत है। Por lo tanto, cada आज uno de nosotros tiene que हमें अपने नफ्सों के poner la खिलाफ जिहाद की atención en ज़रूरत estos temas. Hoy है और इस मकसद को es हमने हासिल necesario करना hacer un jihad importante contra nosotros है। अल्लाह mismos. ताला के पैगाम Tenemos पहुंचाने que का मकसद जो है conseguir este ये भी एक जिहाद objetivo है। इसकी
की तरफ से हम tenemos que तवज्जो llevar देंगे। este mensaje hacia अल्लाह los ताला की मदद के pueblos. बगैर Tenemos que हम pensar कामयाब en नहीं हो ello, porque अल्लाह sin ताला का ayuda फजल eterna no podemos उसकी इबादत का हक अदा करने से होता है। favores बस de अपनी नमाजों Dios, की हिफाजत करेंगे porque a Dios se le और adora उसके con फजल su को हासिल ayuda. करने वाले हम बनेंगे Si cuidamos de las और oraciones, उसके हाथ में हिस्सा लेने entonces वाले seremos होंगे capaces de conseguir जो नफ्स का भी जिहाद esa और खुदा ताला participación का en la पैगाम पहुंचाने का jihad, भी जिहाद है। que es la आजकल के jihad मुआशरे में contra uno mismo इंसान को सबसे ज़्यादा y ज़रूरत el इस poder जिहाद की। llevar libros a los demás. यही जिहाद है Hoy जो हमें el ser humano मुआशरे की बुराइयों से बचाकर necesita hacer una खुदा ताला jihad के हुजूर que हाजिर es करने वाला बनाए, libre de los खुदा ताला की रज़ा को हासिल करने वाला बनाए। problemas, enfermedades de la यही जिहाद है sociedad जो हमें y nos lleve हमारे a जिस्म ser को contentos de Allah. दुनिया की गलासतों से Y este es el पाक और jihad साफ रखने वाला que बनाएगा। nosotros tenemos बस que इस इनाम से mantener जो अल्लाह ताला ने limpia आपको किया nuestra है familia. इससे फ़ायदा Por उठाएं। eso este इस favor मस्जिद que को Dios nos ha अल्लाह dado ताला के लिए खालिस करते हुए tenemos उसकी इबादत que से सजाएं agradecerlo. ताकि Esta अल्लाह ताला mezquita के es फजल solo को de वारिस करें। Dios y debemos अल्लाह करे adorarla, कि मस्जिद embellecerla पूरा con करने nuestras वाली हो oraciones. और हम अपनी Que जिम्मेदारियां Dios भी quiera अदा करने que वाले esta बने। mezquita cumpla वरना मस्जिद तो esta यहाँ इस सूबे में esta आज से पहले मिस्र और función, सऊदी अरब के पैसे porque से मुसलमानों ने mezquitas, बना ली हुई है। dice Ruth, en esta misma zona hay लेकिन ya mezquitas de उनमें Saudía, मसीह मोहम्मदी को ना मानने की वजह से जो कमी है pero वो कमी सिर्फ al और no सिर्फ aceptar जमात al अहमद की no तारीफ करता amar मसाइल से पूरी हो सकती है। बस esta ये बात falta हर solo se अहमदी puede को suplir con la construcción de मजीद mezquitas तवज्जो ahmadis. और फिक्र दिलाने वाली Por lo होनी चाहिए tanto, cada Ahmadi कि आपकी जिम्मेदारी necesita बढ़ती चली जा रही है ser इस मस्जिद का despertado. हक अदा करने के लिए Y es que vuestra responsabilidad बहुत crece. ज़्यादा कोशिश करनी है। Cada vez tenéis más अल्लाह ताला responsabilidades. इसको निभाने की तौफीक Tendréis que अता hacer फरमाए। mucho esfuerzo para cumplir con sus मस्जिद के बारे में obligaciones. Que चंद Dios कवायद भी tiene la पेश कर देता हूँ। oportunidad de cumplir con ello. Doy algunos मस्जिद datos de का la mezquita. सबका हिस्सा 1350 फुट है 1.350 metros cuadrados. और इसका खर्च तकरीबन 1.2 मिलियन यूरो के करीब हुआ है। Han और sido जो स्पेन की जमात ने 1,2 थोड़ा सा ही millones दिया de है, euros. शायद वो भी नहीं दिया। भारत जो La वादे किए हैं comunidad de उनको पूरा करना España चाहिए। ha dado muy poco. Las promesas que han hecho जैसा कि मैंने de कहा, cumplirlas, कि अगर माली लिहाज से como he कमजोरी है dicho, तो वादे जो पूरे करने वो तो करें, si लेकिन no hay उसका mucho हक इस तरह भी dinero, अदा कर por सकते lo हैं कि menos मस्जिद की इबादत las तब्दील promesas के मैदान में उतरें। cúmplanlas, ya que si no pueden pagar, por lo menos hagan tabligh. और हॉलों की यहाँ गुंजाइश जो है 250 Hay इनके तादाद के लिए हुए dos, शुमार के hay मुताबिक है, halls लेकिन बहरहाल बड़े भी हैं que काफ़ी। tienen 250 स्कूलियात metros भी यहाँ हैं, cuadrados, 7 दफातर हैं, एक लाइब्रेरी है, बुक शॉप है, किचन बड़ा अच्छा 7 है, oficinas, una स्टोर है, टेक्निकल librería, रूम है। una cocina muy फिर इसी amplia, तरह इस इमारत को सारी को एयर कंडीशन un किया गया है। almacén, मर्दों और औरतों के todo लिए el अलहदा edificio tiene aire acondicionado. वजू वगैरह की सहूलतें भी Hay हैं। 2 secciones para फिर, hombres y mujeres de forma separada. यहाँ बंगला तो पहले जब दिया था, घर जगह खरीदी गई उस वक्त था, उसमें मजीद इजाफा किया गया 2 कमरों का, Cuando 3 compramos कमरों का। el bungalow, había un bungalow aquí en el terreno y se han ampliado 2 habitaciones en el एक bungalow. अखबार ने ये गुज़श्ता दिनों लिखा है कि सूबा की सबसे बड़ी इबादतगाह El periódico ha एक escrito हकीकत का रूप धार चुकी है। que अब ये सबसे बड़ी इबादतगाह जो है हकीकत का रूप असल में तो उस वक्त धारेगी esta जब mezquita, हम में से हर एक इसका हक अदा करने वाला होगा। este lugar de adoración, será excelente एक cuando बात cada उसने uno और cumpla लिखी sus बड़ी अच्छी, जो हुकूकुल इबाद की तरफ aspectos de la का adoración. इजहार है, Y dice el तो यहाँ के periódico हर अहमदी से होना चाहिए। वो कहता है कि इस्लाम से अकीदत की वजह से अहमदी लोग अल्लाह के नाम पर que खून los बहाने से ahmadis, खून बहाने वाले हर en आदमी के nombre खिलाफ de Dios, están en contra de cualquier acto de terrorismo en nombre de सच Dios. इसके अलावा इस मस्जिद के साथ 2 मल्टीपर्पज़ हॉल भी हैं जो Aparte औरतों de मर्दों के लिए esta ओवरफ्लो के लिए mezquita इस्तेमाल hay हो सकते हैं। अल्लाह करे कि ये मस्जिद इलाके और सूबे के लोगों को 2 इस्लाम lugares की en que se puede तस्वीर पेश utilizar करने वाला para साबित हो। cuando, और हम में से हर cuando अहमदी haya जो यहाँ un रहने वाला núcleo है इस इलाके में,
Que Allah nos ayude para que cada amal en esta época, en esta zona, haga lo posible con sus obligaciones. En esta mezquita, en la construcción, como les he contado, la mayoría de la ayuda ha venido de la sede central, pero el aspecto técnico también ha sido de Marcos Chorri y Gaza, es un antiguo ingeniero donde ha hecho mucho trabajo, ha llevado adelante el proyecto y ha buscado el mayor ahorro sin comprometer la calidad. Está enfermo del riñón, pero que con la ayuda de Allah él ha trabajado con mucho ahínco. Que Allah Ta'ala se lo agradezca y que pueda seguir trabajando también en los temas de la comunidad en el futuro. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.